Good morning, everyone. Okay, we need to start exactly from the point where we left yesterday. So I'll open up the same theorem which we were discussing yesterday, right? So, firstly, let me complete the proof of this. Okay, what was this theorem about? This theorem was that if you have any two fields and sigma r1, sigma 2, sigma n are distinct monomorphisms of E into K, then they are linearly independent. So we already know the meaning of linearly independent as functions. So we were using that and we are proving that with induction. So for n is equal to 1, we show this is Li. For n is equal to n minus 1, we assume that, and now we are proving for n. So on the contrary, we suppose they are linearly dependent. So that is meaning that's equivalent to say that there will exist not all zero scalars AI such that this linear combination is going to be a zero map. And suppose one of them which is not zero is an, so you can divide by an. So this is a zero map. The meaning of zero map is it will take every element to zero. So for all x, this as a map when applied to x will take it to zero. For simplicity, I called this A1 by AN, A2 by AN by B1, B2 respectively. So I have reached at equation number 1. Now then I told you that it is always possible for us to choose an element from the field E such that sigma 1 x1 is not same as sigma n x1. I explained you the reason why that is possible because they are all distinct monomorphisms as given in the question. So if two maps are different, so that means one element in the domain should at least be there whose image is different. So we choose that element to be x1, a non-zero element. Sigma 1 x1 is not same as sigma n x1. So now we are going to continue the proof of this one after this. Okay, so let me see where I had it. Just a moment. Yes. So now we will apply this mapping B1 sigma 1 over an element which is x1 into x. We already have the result for x. Now I am applying into x1 into x plus b2 sigma 2 x2, sorry, x1. The element remains x1 into x, b3 sigma 3 x1 x, and so on. Sorry, there is no bn. Sigma n is just sigma n. X1 into x is 0. Now, since this sigma 1, sigma 2 are homomorphisms basically, so you can write that further as sigma 1 x1 into sigma 1 x plus b2 sigma 2 x1 into sigma 2 x, and so on, sigma n x1 into sigma n x. So this is becoming 0. So you can divide by this. So what I'm trying to do is constructing another equation. I already have one equation, equation number 1. Now I'm going to construct another equation. So you see the difference between equation 1 and equation 2. Here it is sigma nx. Here also it is sigma nx. It's just multiplied with the coefficient. So let me divide with this. So divide by sigma n x1. So when you divide by sigma and x1, then you will get v1 sigma 1 by sigma n, b2 sigma 2 by sigma n, and what will be the last term? It will be simply sigma n into x. This equation I'm calling equation number 2, and now I'm going to subtract equation number 1 from 2. When I'll be subtracting equation 1 from 2, what will happen? This term, the last term, is going to get exactly cancelled because sigma nx is there, right? You can see this term is same as this term. So on subtraction, this will get cancelled. So what I will be left with 2 minus 1. So you get B1 sigma 1 x1 by sigma n x1 minus 1 sigma 1 x, because you see
what was your equation number 1? Equation number 1 was B1 sigma 1x, B2 sigma 2 x. Yeah, so B1 should actually also be outside because B1 sigma 1x is common. This is additional factor here and there is just 1. So this is like this plus B2 sigma 2 x1 by sigma n x1 minus 1 into sigma 2x and so on. What will be the last term? The last term will be Bn minus 1 sigma n minus 1 x1 sigma n x1 minus 1 into sigma n minus 1. Sorry, let me write that again. That's in next line. Let me write that in next line. So the last term of this expression is going to be Bn minus 1 this will be sigma n minus 1 x is equal to 0 because the nth term, sigma n term has been subtracted, cancelled. So this will be the terms. Now, what is happening here? Now, B1 is non-zero. From where we get that B1 is non-zero? Because we were having that the scalars are non-zero, the AIs. So BIs are coming from AIs. So we know that at least these scalars are non-zero. AIs are not all zero, so BIs are also not all zero because BIs are nothing but in terms of AIs only. Okay, so if AIs are not all zero, so BIs are also not all zero. So it cannot be possible that B1, B2, Bn minus 1, all of them are zero. So BIs are all not zero. So that means there definitely exists some non-zero BI. And these terms are also non-zero because if in particular you can say B1 is non-zero and this sigma 1 x1 sigma n x1 is not equals to 1. Why that is so? Because sigma 1 x1 is not equal to sigma n xn. We had chosen our x1 in that way only. This one was the condition that they are not equal. So that makes this term non-zero, the minus 1. It implies the mappings, these are linearly dependent because you are getting non-zero scalars as the coefficients such that the linear combination is becoming 0 because we know whenever we have linear combinations of some functions to be 0 and if all scalars become 0 then you will say yes, that is Li, otherwise Ld. So that is a contradiction because we assumed according to induction that n minus 1 up to n minus 1 they are linearly dependent. So this is a contradiction. Therefore, sigma 1, sigma 2, sigma n have to be linearly independent. Is that fine? So we have just shown that these monomorphisms are going to be linearly independent and in particular, now you can say there is a corollary of this theorem. Now these sigma i's were from E to K. So they were from one field to another field. These fields can be different also, they can be same also. So in particular, you take the field to be same. In that case, the maps are going to be onto also because that can be very easily proved because you are going from same field to same field. We have done similar kind of proof. If you remember that first we have a monomorphism and then you can always construct a isomorphism from that, and when it is from the same to same field it is automorphism. So the corollary is, or you can say the outcome of the above theorem is that the set of automorphisms of K is linearly independent over K. So now we are fixing the thing at automorphisms because now we are more interested in K to K. And we have already shown that this forms a group. So okay, maybe we have not done that particular, but you can very easily do that yourself. You show that this set of automorphisms of K, it is denoted by AUTK. So whenever you see this written AUTK, so that means it is containing all the automorphisms which can be defined on the set K, means from K to K,
all the 1 1 onto homomorphism mappings. So if you take that set, so that set is going to form a group under, obviously, what is the operation between two mappings? So under the operation of composition. If we have not shown that, I'm not sure whether we have done this before or not, so you can try this yourself. So showing a group is easy. You have to show closure. That means sigma 1 is automorphism, sigma 2 is automorphism, so sum of them is also automorphism. Sigma 1 plus sigma 2 is also automorphism. So closure will be done. Associativity is very easy. That is by default part of, sorry, it's not plus, you have to show under the resultant composition that sigma 1 star sigma 2 is also a homomorphism, and so on, all the properties. So I'm leaving that to you. You can try this. It's very easy. And what will be identity of this group there? Because we know there is an identity map. So identity map is always existing, and that map is always an automorphism because it is from k to k. It's 1 1 and onto map, and invertible because the maps are uh, 1 1 and onto, so they will be invertible also. So for every sigma I there will exist sigma I inverse. So I'm just jotting down the properties of being a group. You can very easily show them that this is what, that this odd k is a group. Okay, so now we are coming to the next definition. So we are now closely heading towards the Galois field, the definition of Galois field. So this is all connected with this automorphisms, monomorphisms. That's why I'm building up the theory like that. So let me define F automorphism. Yeah, and there is a correction here. I think in from in the last lecture or before that, when we were discussing results of automorphisms, then we defined automorphisms on a field, and there by mistake I think I introduced the word F automorphism. So that it was not F automorphism. There it was simply an automorphisms on the field F. Okay, but if it is specifically written F automorphism, then it has a different meaning. Okay, automorphisms over a field F is something else. Just like I have defined, it is automorphisms. It's a set of all automorphisms which can be defined from F to F. But specifically, if I use the word like F automorphism, then it has a different meaning. So that definition I'm going to give you now. Let F be any field and K be extension of F, then an automorphism sigma of K means, where is sigma belonging? Sigma belongs to this set, the set of all automorphisms. So that automorphism is said to be an F automorphism if sigma of x is equal to x for all x belongs to F. That is, sigma fixes every element of F to itself. Okay, so you have a field, you have its extension. So the sigma is basically taken from the, it's an automorphism on that extension field over K. So it is said to be F automorphism if it is fixing every element of X to itself. That means for field, it is acting like an identity map, right? If that is happening, so we say it F automorphism. I'll give you an example. So we know that real, we have it's an extension field of the reals. So if I define a map that A plus iota B, sigma A plus iota B is A minus iota B. We have shown this many times. This is very easy to show. This is a 1 1 onto map. This is the automorphism. Okay. So this is for all AB belongs to real, or you can say for all A plus iota B belonging to complex numbers. Now in particular, if I just apply it to real number, then what will be the answer? It will be same, because what this map is doing, it is taking every complex number to its conjugate.
to its complex conjugate. And what is a complex conjugate of real number? The real number itself. It is taking a to a, because a is a plus 0 iota. So which is same as a minus 0 iota. So that means every real number is mapped to itself only. So this map, which is otherwise defined from C to C, just like that, but when it applies to real numbers, so then it acts as a identity mapping, right? And real number is a subfield of the complex. So that means yes, this map sigma is acting like F automorphism. F automorphism, now I'll be calling it R automorphism because my F is R here. I hope the definition is clear to everybody of F automorphism. Is it clear up to here? Right? So next we have to prove that the set of all F automorphisms of a field K is a group and it is a subgroup of aught K. Because right now I just told you that the set of all automorphisms. So you have basically sigma from K to K, where sigma is the automorphism. So sigma is definitely belonging to this set, and we know that this forms a group. Now we are saying out of these all automorphisms, the ones which will be F automorphisms, right? So not every automorphism is a F automorphism. There will be some of them. So the ones which are F automorphisms, they will form a subgroup of the main group. Okay, they will form a group, and that group is going to be a subgroup of aught K. So let me just show that. So we will use the result from group theory, and that result says that a non-empty set H of a group G, I should say actually subset, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if. Yes, can anybody tell me the condition? This is AB inverse belongs to H. yeah, AB inverse belongs to H. Basically, it's A star B inverse belongs to H, where star is the whatever is the underlying operation. So that is the condition. So because here we want to show that is a subgroup, so that means we are already assuming the information that aught K is a group is already known to us. We just want to show that that is a subgroup. So what we will do, we will suppose two maps. Let sigma 1, sigma 2 belongs to the set of all F automorphisms. Then we need to show that sigma 1, sigma 2 inverse also belongs to the set of all F automorphisms. That's what it means, because if we prove this one, that means it will be proved that it is a subgroup. This set is a subgroup. So it's easy. So what you need to show that this belongs to the set of all F automorphisms, that this fixes the elements of F, sorry. That is sigma 1, sigma 2 inverse X should be same as X for all X belongs to F. That's what the meaning of F automorphism is. So let's consider this. We will show that this is equal to X. Right. So sigma 1, sigma 2 inverse X. So we know that how the mappings are applied in composition, that first we use the first map which is applied on X, which is sigma 2 inverse. Now what is sigma 2 inverse of X? Sigma 2 is a F automorphism. That means sigma 2 is taking X to X. So where sigma 2 inverse is taking X to, what is the equivalent way that X is sigma 2 inverse X?
because it's like identity map, right? It's invertible. It's already all mappings are invertible in this set because all of them are automorphism. I just need to know what is the inverse image of that. So if fx is x, so x is the inverse image of f inverse, obviously. Sigma 2 is taking x to x, so sigma 2 inverse is also taking x to x. It is like this. It's fixing, it's taking it to same element. Then on using this map sigma to inverse, it is also taking x to x only. So this one is x. Now what is sigma 1x? Again x, because that is also f automorphism. So proved whatever we wanted to prove. Therefore we have shown that this set forms a subgroup of the bigger group, that is all automorphisms. So now we are going to define another definition which is related with this, because now we have shown that the set of all automorphisms is a group. So now we want to give a name to this group. So that name is Galois group. Okay, it's pronounced Galois. It's a French pronunciation of that. It's written like Galois, but it's never pronounced Galois. So you can read the history about this field medalist Galois. In your book, it is given. Right now, I'm not going into details of that, but that is a remarkable another start of field theory. The last part of field theory is always the Galois theory. So Galois theory starts from here. In our book, in our course, we are just to introduce this Galois theory. So that's why we are near the end of the chapter. But otherwise, this is a very big theory, means you can still dwell on for one whole semester in studying Galois theory only. So Galois group of K over F, what is that? So it is nothing but the same group which I just told you. So this is going to be the notation GKF. So G stands for Galois, K stands for extension field, and F is your field for which you are constructing this. So this is what? This is nothing but, so this is not let, this is the definition. GKF is a set of all F automorphisms of K, and we already shown it's a group, so it's called Galois group. Okay, so clearly we have just shown that this Galois group is a subgroup, is a subset of aut K, and basically more precisely it is a subgroup of that. Okay, so now let me give you another result for the same. So we'll not prove that, we'll be directly defining that. We will see where it is going to be used. Let K be any field extension of F and A belongs to K, be algebraic over F, then for every F automorphism sigma of K, sigma A is a conjugate of A over F. Right, so let's understand the meaning of this result. It is saying we have a field F, K is its, we have a field F, K its extension, and A belongs to K is any algebraic element. So then for every F automorphism sigma of K, sigma A is going to be conjugate of A. So does anybody know the meaning of conjugate of an element? It's not the complex conjugate, it's just conjugate, right? So let me define the word conjugate for you. Two elements, obviously both of them have to be algebraic elements. So two algebraic elements of a field are said to be conjugate to each other if their minimal polynomial is same.
because they are algebraic elements, so there will exist some minimal polynomial over the field which they will be satisfying. तो अगर उनका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, मींस वो दोनों एक ही पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, एक ही मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, then we calling them conjugates of each other. So you very well know that if I take this as an example, so I know iota and minus iota, they are conjugates of each other, because iota is also satisfying this and minus iota is also satisfying this. So as an element, if I look at, iota is algebraic over reals, minus iota is also algebraic over reals. But are they conjugate? Yes, they are conjugate because they are satisfying the same minimal polynomial. Okay, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होना चाहिए. ऐसे तो आप हर एलिमेंट के लिए पॉलिनोमियल बना सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर मिनिमल पॉलिनोमियल शुड बी सेम. दैट इज वाई जब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. सो दैट्स वेयर द वर्ड कॉन्जुगेट इज कमिंग फ्रॉम. बट हमें कॉम्प्लेक्स के लिए तो उसका मीनिंग पता है, बट इन जनरल ये मीनिंग होता है कॉन्जुगेट का. सो दिस रिजल्ट इज टेलिंग अस कि अगर जो सिग्मा है एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो वो किसी भी एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट पे मैप करेगा. मींस अगर ए के का कोई एलिमेंट है, बिकॉज सिग्मा इज डिफाइंड फ्रॉम के टू के, तो वो एल्जेब्राइक एलिमेंट्स को जहां पे लेके जाएगा, वो एलिमेंट भी क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट ही होगा, वो ए का कॉन्जुगेट होगा. मींस the element and its image, they are having the same minimal polynomial. Okay, I'm skipping the proof of it. That's just not required. So then next move to the next result. ये conjugate वाली जो example है, ये हम example करेंगे, उसमें आपको और clear हो जाएगा that how to use this in examples, how to use this result in examples. So let me give you the next result. So GB ऑट के. सो ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज ऑट के. अब हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं, एफ नॉट. दिस इज अ subfield of K and this is called fixed field under G denoted by कामा जी. सो ये थ्योरम के साथ मैंने डेफिनेशन भी बीच में इंक्लूड कर लिया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. व्हाट इज दिस एफ नॉट. अब हमारा मेन सेट वही है जो ऑट के है. अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम के में से कुछ एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं. दिस एफ नॉट इज अ सबसेट ऑफ के. ओके, सो यू हैव दिस एफ, दिस इज के. अब के का फर्दर हम कोई सबसेट बना रहे हैं विच इज containing a particular type of elements. किस तरह के एलिमेंट्स है उसमें, तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं such that sigma of x is equal to x for all sigma belongs to G. तो उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो सारे सिग्माज से फिक्स हो रहे हैं. तो उन सब का जो सेट बनेगा वो सब फील्ड होगा के का, और उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड फील्ड अंडर जी. तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाता है कई बार एफ ऑटोमॉर्फिज्म के साथ. लेट मी क्लियर इट. एफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या था? एफ ऑटोमॉर्फिज्म था कि उस ऑटोमॉर्फिज्म को हम, उस सिग्मा को हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे जो फील्ड के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करता है, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करता है. तो वहां पे चॉइस कैसे हो रही थी कि जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर सिग्मा होगा जो सभी एलिमेंट्स को फिक्स करेगा, उसको हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे. यहाँ पे चॉइस एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है. जो सेट बनाया जा रहा है वो एलिमेंट वाइज बनाया जा रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म से नहीं बनाया जा रहा. तो हमने इस एफ नॉट में वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सारे सिग्माज से फिक्स हो जाएंगे, राइट. लाइक जीरो, तो जीरो इसमें हमेशा होगा बिकॉज एवरी सिग्मा टेक्स 0 to 0, चाहे वो होमोमॉर्फिज्म है कोई भी, चाहे ऑटोमॉर्फिज्म है. एवरी it takes always, zero is always mapped to zero. That's a fundamental property of homomorphism, right? तो जीरो अब एलिमेंट एफ नॉट का पार्ट हो जाएगा क्योंकि सारे सिग्मास जो हैं जीरो को जीरो पे ही लेके जाएंगे. Is the difference is clear? So ये जो सेट है, it contains all those elements of K which gets fixed by all sigmas. This will form a subfield. तो सबफील्ड शो करने के लिए भी
We know we have the condition for showing the subfield. So you start with let xy belongs to f naught. इट्स लाइक सब रिंग, जैसे सब रिंग का हमारे पास होता है, सो सेम इज हम सब्ट्रैक्शन शो कर देंगे. सो सिग्मा ऑफ x माइनस वाई विल बी सिग्मा ऑफ x माइनस सिग्मा ऑफ y. अब एक्स वाई क्योंकि एफ नॉट का पार्ट है, सो दैट मीन्स सिग्मा इज फिक्सिंग दैट x माइनस वाई. सो दैट मीन्स सिग्मा इज ऑल्सो फिक्सिंग x माइनस वाई. इट इम्प्लाइज x माइनस वाई भी एफ नॉट में आ गया. अब एफ नॉट को हम सब रिंग जैसे शो कर रहे हैं. और दूसरा आप प्रोडक्ट भी शो कर दो. सिग्मा ऑफ एक्स वाई इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये आप शो करोगे. सो ये तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है. तो इसके बाद क्या आ जाएगा एक्स वाई. तो दैट मीन्स एक्स वाई एलिमेंट भी जो है वो फिक्स हो गया. सो एक्स वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ नॉट. सो एफ नॉट इज अ सब फील्ड ऑफ के. प्रूव हो गया. अब इस सब फील्ड को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड फील्ड अंडर जी. जी इज व्हाट? द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स. तो फिक्स्ड फील्ड से ही क्लियर है. तो ये वो वाले एलिमेंट है जो सभी सिग्मा से फिक्स हो रहे हैं, दे आर मैप टू देमसेल्व्स. सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड फील्ड. ओके, सो नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी उससे. फाइंड द fixed field of K under G. G is we know odd K. So first example is K हमने लिया है Q root 2. तो हम Q root 2 का fixed field find करना चाहते हैं. Means हम Q root 2 field के वो वाले elements find करना चाहते हैं जो इसके सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स से क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. Right. So Q is contained in Q root 2 and we know that Q is a prime field. Q is actually a prime field. We know that, we have just yesterday proved it. So sigma of A is equal to A for all A belongs to Q, because sigma is an automorphism on Q root 2. So यहाँ पे एक रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं जो I skipped that result but we need to use it here, so I'm giving you the statement here that अगर कोई प्राइम फील्ड होगा किसी भी फील्ड में कंटेन्ड होगा तो वो प्राइम फील्ड के सारे एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमॉर्फिज्म क्या करेगा, फिक्स करेगा. वी कैन ऑलवेज शो दैट कि वो फिक्स्ड फील्ड में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मान लो आपके पास से P है और ये आपका है फील्ड K. अब इसमें क्या है एफ नॉट, बिकॉज फिक्स्ड फील्ड है वो K की ही एक्सटेंशन, K का ही सब फील्ड है, अभी हमने शो किया है. तो अगर K में कोई प्राइम फील्ड है, ओके, एवरी फील्ड कंटेन्स अ प्राइम फील्ड, बिकॉज हम हर फील्ड में एक स्मॉलेस्ट फील्ड फाइंड कर सकते हैं जिससे स्मॉलेस्ट कोई फील्ड नहीं मिलेगा. सो वो यही वाला रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेगा. ये तो नहीं हो सकता, K हो सकता है. इज दिस पॉसिबल इफ P इज प्राइम फील्ड? यस, इज दिस पॉसिबल? अगर P प्राइम फील्ड है तो एक बार आप ये ऑटोमॉर्फिज्म सब कुछ भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस रिजल्ट. इज दिस पॉसिबल? yes, is anybody answering that? Why it's not possible? Because it's a prime field. prime field की definition क्या होती है? It has no proper subfield. So F नॉट जो K का सबफील्ड है, फिक्स्ड फील्ड जिसको अभी हमने प्रूव किया है, तो अगर जो भी प्राइम सबफील्ड होगा K का, it will not be
satisfying this one, it will be in this kind of relationships, right? So फिक्स्ड फील्ड में कंटेन होगा जो प्राइम फील्ड होगा. सो दैट मीन्स अब फिक्स्ड फील्ड में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो के ऑटोमॉर्फिज्म से फिक्स हो रहे हैं, राइट? सो सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ नॉट, क्योंकि यही फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन है. इट इम्प्लाइज सिग्मा ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू पी, क्योंकि वो एफ नॉट के अगर सारे एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा है, दैट मीन्स वो पी के भी सारे एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा है, क्योंकि वो उसी का सबसेट है, उससे ज्यादा नहीं है उसमें एलिमेंट, वो सारे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे. सो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है कि क्यू रूट टू के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो क्यू रूट टू इज योर के. हमें देखना है कि क्यू रूट टू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो फिक्स हो रहे हैं, हम उसका फिक्स्ड फील्ड फाइंड कर रहे हैं. तो पहले हमने उसका प्राइम सब फील्ड फाइंड किया. तो क्यू रूट टू का हमें पता है दिस इज वन ऑफ द सब फील्ड ऑफ क्यू रूट टू विच इज क्यू, एंड एवरीबडी नोज दैट दिस इज अ प्राइम फील्ड. ये हमने कल प्रूव किया था. तो इस आर्गुमेंट से हमें पता चल गया कि क्यू के तो सारे एलिमेंट्स को सिग्मा जो है फिक्स करेगा ही करेगा फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी. Yes, is this clear to everyone? So that means जो भी आप फिक्स्ड फील्ड फाइंड कर रहे हो वो Q को तो कंटेन करेगा ही करेगा. So it will lie somewhere here. So now we need to know कि वो Q के अलावा और कौन से एलिमेंट्स को फिक्स करेगा, right? This is what we want to know. Okay. अब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे इसमें जो मैंने अभी पीछे आपको कॉन्जुगेट वाला रिजल्ट बताया था कि दो एलिमेंट्स अलजेब्राइक कॉन्जुगेट होते हैं if their minimal polynomial is same, and this theorem tells you कि जो भी f ऑटोमॉर्फिज्म होता है, मीन जो एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं, तो वो हर एलिमेंट को जी जो इमेज पे लेके जाएगा वो भी उसका कॉन्जुगेट ही होगा. सो दैट मीन्स व्हाट? अब देखो क्यू रूट टू में क्या एलिमेंट्स थे, या तो उसमें रैशनल्स हैं या उसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, रैशनल प्लस रैशनल टाइम्स स्क्वायर रूट टू. तो अगर तो बी जीरो है, मीन सिर्फ रैशनल एलिमेंट है, उसकी तो हमें इमेज पता चल गई कि वो तो ए पे ही जा रहा है. तो अगर हम रूट टू की इमेज फाइंड कर लें कि रूट टू कहाँ पे जाएगा, सो हमें हमारा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हमें ए की इमेज पता चल गई, बी की इमेज भी पता चल गई, बी इज ऑल्सो रैशनल. तो हमें रूट टू का पता करना है कि रूट टू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या रूट टू पे ही जाएगा या किसी और एलिमेंट पे जाएगा. सो वी आर इंटरेस्टेड इन फिगरिंग आउट दिस वन. व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर रूट टू? इज इट फाइन द वे वी आर प्रोसीडिंग? yes, anybody has any doubt? Okay, so what are the possibilities for sigma root 2? What are the possibilities? Either it can be square root 2 or it can be square root 2 ka negative. Yes, from where this is coming? This is coming from the same result which I just told you, because sigma of A has to be conjugate of A. उसका कॉन्जुगेट ही होगा. तो रूट टू के कॉन्जुगेट क्या है? माइनस रूट टू, बिकॉज root 2 or minus root 2, they are having, they are the roots of this polynomial, they have the same minimal polynomial. So what is the conjugate of root 2? Minus root 2. So that means sigma of root 2 के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो वो रूट 2 को रूट 2 पे ही लेके जाएगा, फिक्स कर रहा है उसको, या वो उसको माइनस रूट 2 पे लेके जाएगा. सो मीन्स हमारे जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो सब इसी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं. कुछ उनको रूट 2 पे लेके जाएंगे और कुछ उनको माइनस रूट 2 पे लेके जाएंगे. सो केस 1, when this happens, so if sigma root 2 is root 2, so sigma of a plus b root 2 क्या होगा? Just use the definition of homomorphism. अब a और b रैशनल्स हैं और रैशनल्स तो ऑलरेडी फिक्स हो रहे हैं, हमने अभी एक आर्गुमेंट दिया है. सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा? सेम एलिमेंट पे फिक्स हो जाएगा अगर रूट टू भी रूट टू पे ही जाएगा. दैट मीन्स ये सिग्मा इज एक्टिंग लाइक आइडेंटिटी मैप. ओके, तो आइडेंटिटी मैप जो है वो फिक्स करेगा वो सभी एलिमेंट्स को
सेम पे ऊपर। अब दूसरा केस क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दोज सिग्मास जो √2 को कहाँ लेके जाते हैं, -√2 पे। तो अगर √2 -√2 पे जाएगा, सो इट्स इजी टू सी, ये पूरा एलिमेंट की इमेज क्या बनेगी, a माइनस b√2। सो दैट मीन्स दो ही ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, राइट। देखो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम वो एलिमेंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स से फिक्स हो रहे हैं। तो पहले हम सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड कर रहे हैं कि कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। तो वो हमने यूज कर लिया कॉन्जुगेट वाले रिजल्ट से कि देयर एग्जिस्ट ओनली 2 f automorphisms, there exist only, sorry, not f automorphisms, total automorphism, there exist only 2 automorphisms on the set q√2। कौन कौन से, एक आइडेंटिटी मैप है और एक ये वाला विच टेक्स a प्लस b√2 टू a माइनस b√2। इनके अलावा कोई ऑटोमॉर्फिज्म ही नहीं है एज शोन अबव, राइट। तो अब फिक्स्ड फील्ड में हमें वो सारे एलिमेंट लेने हैं अपने फील्ड के जो फिक्स हो रहे हैं फॉर ऑल सिग्मा। अब फॉर ऑल सिग्मा कौन कौन से हैं, ये 2 सिग्मा है आपके पास, एक आइडेंटिटी है और एक ये। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे आपके रैशनल्स, बिकॉज आइडेंटिटी मैप तो सभी को फिक्स कर रहा है, बट ये वाला मैप जो है ये फिक्स नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसको फिक्स करेगा, रैशनल्स को। ओनली रैशनल्स आर फिक्स्ड। जैसे मैंने ऊपर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया था कि रियल्स ही फिक्स होंगे, क्योंकि अदरवाइज आप जैसे ही स्ट्रिक्टली यू कैन से प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, स्ट्रिक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस वो अपने कंजुगेट पे जाएगा विच इज नॉट सेम। So if you want this map to act like sigma is equal to a, so that is only possible if b is 0. So b is 0 means your element should belongs to rational only. So that means fixed field exactly same हो गया rationals के। So यहाँ से हमने starting में तो बोल ही दिया था कि fixed field rationals को तो contain कर ही रहा है। All but we were trying to find कि क्या rationals के अलावा भी ये किसी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो उसके लिए हमने कॉन्जुगेट वाले रिजल्ट से फिगर आउट किया कि कौन कौन से ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल है और ये दोनों ऑटोमॉर्फिज्म्स मिलके सिर्फ रैशनल्स को ही फिक्स कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिटी मैप तो सबको ही फिक्स कर रहा है। अगर सिर्फ आइडेंटिटी अकेला ऑटोमॉर्फिज्म होता तब आपका फिक्स्ड फील्ड पूरा फील्ड ही बन जाता, बट हमें कंडीशन है, हमें वो एलिमेंट चूज करने हैं जो फॉर ऑल सिग्मा से फिक्स हो रहे हैं, सो दे आर ओनली रैशनल्स। सो द फिक्स्ड फील्ड, यू कैन से द फिक्स्ड फील्ड ऑफ k which is q√2 is q. So this is one example where I have shown you how to find fixed field of a particular given field to u. Is it fine? Yes, is it fine? Yes, ma'am. Right? तो अभी हमारे पास वैसे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है करने के लिए। सो लेट मी जस्ट टेक दिस 5 मिनट्स जो हमारे पास हैं, 4-5 मिनट्स, देयर इज जस्ट वन डेफिनेशन लेफ्ट। इनके जो एग्जांपल्स हैं, व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड यू दोज एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स इन नोट्स। अभी मैं एक एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, बट 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगी, अभी समझने के लिए आप समझ लो। सो दिस इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ Galois extension. So this says a finite extension K of a field F is said to be Galois extension of F if F is the fixed field of K under GK of all F automorphisms. So बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि किस एक्सटेंशन को हम गैल्वा एक्सटेंशन बोलेंगे। तो
finite extension, first of all it should be a finite extension, so that is should be clear, right? It should be a finite extension. हम infinite extensions की बात नहीं कर रहे. A finite extension is said to be Galois extension if F is acting as a fixed field of K under GKF all of F automorphisms. जैसे हमने fixed field find करते हैं under the set of all automorphisms, कि वो सारे automorphisms के अंदर find करो जो सारे हैं, means sigma belongs to aught K, the bigger group. But now we are saying the कहाँ से हमें वो monomorphisms, कहाँ से automorphisms लेने हैं, हमें सिर्फ F automorphisms लेने हैं, right? Because you know this Galois group is a this. So अगर हम fixed field find करते हैं under G, जैसे हम कह रहे हैं fixed field of Q is this under G. G is the set of all automorphisms. तब तो हमारे पास जो आता है उसको फिक्स्ड फील्ड बोलते हैं. अब हम कह रहे हैं हमें फिक्स्ड फील्ड ही फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अंडर दिस. तो हमें जो सिग्मा चूज करने हैं वो यहाँ से चूज करने हैं, यहाँ से नहीं चूज करने हैं. तो अगर यहाँ से सिग्मा चूज करने पे जो फिक्स्ड फील्ड आएगा, इफ दैट इज एफ, सो देन दैट एक्सटेंशन इज सेड टू बी Galois एक्सटेंशन. तो आपको फिक्स्ड फील्ड फाइंड करना है, वो अगर एफ ही आता है तो हम उस एक्सटेंशन को Galois एक्सटेंशन बोलेंगे, राइट? So what I'll do, I'll give you the example of this in notes. I'll write the explanation there because थोड़ा सा बड़ा है example but understandable है. अभी हमारे पास 1 ही मिनट है तो won't be able to finish that. So that one example and 2-3 more examples of the things which we have discussed today. So I'll make combined notes of that and I'll send to you. उसके बाद अगर आपको कुछ समझना हुआ anytime you can ask me for a doubt class or doubt lecture. So then we will discuss that. इनफैक्ट पूरे सिलेबस में आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो विद इन द नेक्स्ट वीक यू कैन आस्क मी टू अरेंज अ क्लास एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स. इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? ओके. सो जो कल का सिलेबस है उसमें जो आपने करवाया है क्वेश्चंस और थ्योरम्स उसी में से ही करना है ना, बिकॉज इसकी ट्यूट शीट तो है नहीं जो आपने. हाँ, उसकी ट्यूट शीट इसीलिए नहीं है ना क्योंकि ऑब्वियसली दैट द सेम थिंग आई वांट टू डू इट फ्रॉम यू. जैसे हम ट्यूट शीट करते हैं तो वो असाइनमेंट जैसा ही होगा जैसे ट्यूट शीट में क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. Okay, I'll try to change the time because most of you were suggesting me for the change of. Yes, right. I'll try to make it 10. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. I'll confirm you till afternoon. Okay, ma'am. Okay then, thank you everyone. So that's all for today.